असर खून की नालियों में के ऊपर होता है। जो खून की नालियाँ जब खुल जाती हैं तो उस सिस्टम का फंक्शन बेहतर होना शुरू हो जाता है। जैसे टांगों की खून की नालियों जब खुल जाती हैं तो इंसान को टांगों में दर्दें वर्दें नहीं होती और वो तेज़ चलना शुरू हो जाता है। दिल की खून की नालियाँ जब खुलती हैं तो इंसान को हार्ट अटैक नहीं होता। ब्रेन की खून की नालियाँ जब खुलती हैं तो स्ट्रोक वगैरह से इंसान बच जाता है। इसी तरह इम्पोर्टेंट चीज़ सेक्स के मतलब बताना चाहते हैं कि इसके जिनसी असरात बहुत अच्छे होते हैं। जब खून की नालियाँ जो सेक्स ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं, खून की नालियाँ वो क्लियर हो जाती हैं कीलेशन थेरेपी से के साथ, तो सेक्स परफॉर्मेंस ये कह रहे हैं कि जिनसी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाती है कीलेशन थेरेपी के साथ। तो नॉर्मली अगर डॉक्टर के पास जाया जाए तो वो जिनसी मर्ज के सफ़र करने वाले आदमियों को इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन या इम्प्लांट टेस्टोस्टेरोन का रखते हैं, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और वो उसका इलाज नहीं है। बेसिकली अगर ये कीलेशन थेरेपी दी जाए तो इंसान 80 साल की उम्र के बाद भी जिनसी तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। तो ये रेकमेंड करते हैं कि जो लोग जिनसी कमज़ोरी की या जिनसी मर्ज से सफ़र कर रहे होते हैं वो अगर कीलेशन थेरेपी करवाएं तो उनकी ये बीमारी भी ठीक हो सकती है। Right, William, what do you recommend? Do you recommend this treatment to the patients, and what are your views for how the patient should adopt chelation therapy? And you want to tell something about the billion-dollar industry of surgical treatment for the treatment of atherosclerosis and heart disease, and why doctors don't recommend the chelation therapy to the patients, which is a cheaper option, and why they want to do the surgery as a first step. And why don't you say that in Urdu now also? मैं विलियम से ये पूछना चाहता था कि आप कोई मरीज़ों को बताना चाहते हैं कि कीलेशन थेरेपी क्यों कराई जाए और सर्जरी क्यों ना करवाई जाए, और डॉक्टर भी मरीज़ों को क्यों नहीं कीलेशन थेरेपी लिखते जो कि एक आसान हल है और सारे जिस्म का ट्रीटमेंट इससे होता है, और उसके बजाय ऑपरेशन इमीडिएटली पेशेंट को कहते हैं बाईपास करवा लें। First I want to say that chelation is probably important for almost everybody, because they found statistically that people who've had chelation live 7 to 15 years longer than the average. You can expect 7 to 15 years longer in life and a better quality of life if you've had chelation. So it's really very important. That's one thing. Now, if you ask many doctors about chelation, many will not have heard of it. There are two groups. Some have not heard of it, some know of it, but in the case of doctors who've heard about it, they would rather you spend a lot of money on bypass surgery instead. Or very few doctors, Dr. Shahid Abbas is honest about this, and if he doesn't know, he will tell you. But many doctors, they don't want to tell patients, I don't know. That is the worst thing. Rarely will doctors say, I don't know. Instead, they will say, it's not common, we recommend against it, it's not proven. And in many cases, it's because the doctor simply has not heard about it, or doesn't know enough about it, or has not seen the success. It is not done very often here in Pakistan. Very rarely
So they would have not seen the good results. And anything the doctors have not seen or heard much about, often they say stay away from it. The matter of bypass, the surgeons, it's very expensive to have a bypass operation where they take veins out of your legs, or in some cases use a vein from animals, but normally from other parts of the body, and put that in the heart to bypass around plugged up arteries. That's very expensive. Often those deteriorate after a number of years. Often there is pain in the areas where those veins have been taken out of your leg because they're needed, even though the body sometimes finds alternate channels for that. These are not normal things for the body to be subjected to. With chelation, it's very inexpensive compared with bypass surgery. And if you have high cholesterol that is plugging your arteries up to the heart, or atherosclerosis, which plugs up the whole circulation system, I highly recommend chelation therapy. It is clean, it is natural to do. You have all of your arteries going to the heart in place. You clean up your system. I want to mention one other thing. When you go for a checkup to the doctor, to doctors, sometimes they will shine a light in your eye and look in your eye. They won't usually say anything about that and what they're looking at. My daughter is a doctor, and I asked her one time when she shined the light in the back to look inside my eye, what is she looking for? She told me, we're looking at the capillaries in the retinal wall, the capillaries at the back of the eyeball. And I said, why? She said, it's the only area of the body where the circulation system is transparent, like glass, and you can see inside. You can see how plugged up or how much garbage there is in the circulation system. It gives the doctor an idea that even if you're a young man, if you've got a lot of garbage in those capillaries, you may not live very long. And he probably doesn't want to tell the young man that, the younger man who is maybe 40 years old. Or if he's an older man and his arteries, like mine, my daughter told me my circulation system is very clean. You've got the circulation system of a 35-year-old man. And the doctors basically do not say anything after they look, because they feel, many of them do not know about chelation. They feel that if your system is in bad shape, your circulation system, they can't do anything about it anyway. Why worry you and tell you you're going to die in 5 or 10 years? It gives them an idea how old your circulation system is compared with your chronological age. Whether you've got, if you're 70 years old, whether you've got the circulation system of a 45 or 50-year-old, or if it's in really bad shape and you may not live past 5 years. So it's a big money maker to have bypass and to have heart surgery, but you don't need it if you do chelation therapy. You don't need it, and I recommend it highly. It is done quite frequently in North America. There's been 3 million treatments done in the United States. Canada is only 1/10 the size of the United States, so I won't talk about my country. In Pakistan, I know of only one doctor, and that's Dr. Shahid Abbas here, who does chelation therapy, and frankly, I would highly recommend it. I am coming here to Dr. Abbas because I do my 4 times a year maintenance chelation that I do back in Canada and United States, and this way I can continue on as long as I'm here over the next probably several years. विलियम ये बता रहे हैं कि ये हर इंसान को लेनी चाहिए, चेलेशन थेरेपी करानी चाहिए, क्योंकि इसके साथ
इंसान की ज़िंदगी नॉर्मल ज़िंदगी से तकरीबन 15 साल ज़िंदगी बढ़ जाती है। तो मैंने जब पूछा कि ये डॉक्टर्स क्यों नहीं बताते जबकि ये इतनी अच्छी चीज़ है, इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक्स, ब्रेन हेमरेज, सेक्स प्रॉब्लम्स, ये सब, और आई साइट, आँखों की बीमारियाँ, ये सब चीज़ें इससे बेहतर होती हैं, तो डॉक्टर इतनी अच्छी चीज़ क्यों नहीं बताते और क्यों ऑपरेशन किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि दो ग्रुप्स हैं डॉक्टरों की। एक वो ग्रुप है जिनको इस चीज़ का पता ही नहीं है किलेशन थेरेपी का, तो उन्होंने कभी सुना भी नहीं है। तो जब वो कोई डॉक्टर भी अपने मरीज़ को ये नहीं कहेगा कि मैंने कभी नहीं सुना, वो हमेशा यही कहेगा कि ये चीज़ आप ना करवाएं, आपके लिए ख़तरनाक है, कोई भी इसको रिकमेंड नहीं करता, इसमें प्रॉब्लम्स होते हैं और ये अप्रूव नहीं है, इस तरह किस्म के बहाने। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने इसको सुना हुआ है लेकिन वो करना नहीं चाहते। वजह करना कि इसलिए नहीं चाहते कि वो सर्जरी रिकमेंड करते हैं जिसमें उनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स वो कमा रहे हैं महीने में, तो करोड़ों रुपया वो कमाते हैं साल में। तो वो नहीं चाहते कि जिसमें $100 उसको मिले वो ट्रीटमेंट दी जाए। तो वो ये डॉक्टर नॉर्मली ये चाहते हैं कि उनको उस ट्रीटमेंट से $1 मिलियन मिले बजाय इसके कि $100 मिले। तो ये सारा एक इंडस्ट्री बनी हुई है पैसा कमाने की। अगर इंसानियत की मदद करने के लिए सोचा जाए तो ऑपरेशन रिकमेंडेड नहीं है किसी के लिए भी। इंसान को किलेशन थेरेपी करनी चाहिए जिसकी वजह से वो बहुत बेहतर हो जाते हैं। अब ये इन्होंने मिसाल दी अपनी बेटी की, जो डॉक्टर है और आँखों की डॉक्टर है। उन्होंने कहते हैं कि एक दिन उसने फंडोस्कोपी के साथ मेरी आँखें देखीं और मैंने उसको पूछा कि मेरी आँखों के पीछे क्या झांक रहे हैं। तो उसने बताया कि सिर्फ आँख की कैपिलरीज या आँख की खून की नालियाँ, ऐसी खून की नालियाँ होती हैं सारे जिस्म में जो शीशे की तरह नज़र आती हैं, जो ऐसे हैं जैसे ग्लास की बनी हुई चीज़ को देखें तो साफ नज़र पता चल जाता है, तो उसको देख के साफ पता चल जाता है कि वो कितनी बंद हैं। तो उसकी वजह से इंसान की उम्र का भी अंदाज़ा आप कर सकते हैं कि वो कितनी उम्र है और वो कितना अर्सा ज़िंदा रह सकेगा, क्योंकि वो खून की अगर नालियाँ बंद हैं तो सारे जिस्म की दूसरी नालियाँ बंद हो रही होती हैं। तो इस उम्र में 76 साल की उम्र में जब उसने मेरी आंखें देखी, उस फंडोस्कोपी में साफ पता चल जाता है कि किस तरह की क्या क्या डिपॉजिट हुए और किस तरह बंद हुए, कितना हिस्सा खुला है और कितना हिस्सा खून की नाली का बंद है। तो उसने, मेरी बेटी ने मुझे बताया कि आपकी आंखों में देखने के बाद आपकी जो उम्र, असल उम्र नज़र पता चल जाता है कि 35 साल उम्र है, जबकि असल उम्र मेरी 76 साल है। तो मेरे खून की नालियों इस हालत में हैं जैसे 35 साल की उम्र का इंसान होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान के ये किलेशन थेरेपी कितने अच्छा असरात हो, इसके कितने अच्छे असरात होते हैं। एक दफ़ा खून की नालियाँ खुल जाए तो इंसान की बहुत सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। राइट। I want to make one final statement here, and that is that I'm not getting any financial benefit by doing this video. I'm doing this video because Chelation has helped me. I'm very happy to have found Dr.